Assalamu alaikum friends. Today we are going to make part number 4 of the same topic, that's a quadratic equation. Before this part, मैंने इससे पहले 3 parts बनाए थे. The first part was on the introduction for the quadratic equation. Number 2, it was on exercise 4.1, and number 3rd part, there I discussed the factorization method. Today we are going to solve the questions. As per exams are concerned, as per your board exams are concerned, these questions are very much important. Now moving to the questions. What's the question? Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं जिन दो नंबर्स को मैं अगर सम करता हूं वो 27 के बराबर आएगा, और अगर वही दो नंबर्स उनको मैं प्रोडक्ट करता हूं वो 182 के बराबर आना चाहिए. एग्जाम्पल, लेट अस सपोज दैट अगर मेरे पास दो नंबर है, एक x है और दूसरा y है. Now the question says that this x plus y should be equal to 27, and number 2 it says that x into y is equal to 27. Now concentrate on the conditions given by the question. अब क्वेश्चन क्या हो रहा है? Find two numbers whose sum is 27. दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिनका सम 27 के बराबर होगा. सपोज अगर मैं एक नंबर को x पुट करता हूं, एक नंबर को x पुट करता हूं, so x plus, it says that sum of two numbers, so I will say that x plus, x तो फर्स्ट नंबर है, इस सेकेंड नंबर को मैं सीधे नाम रखूंगा सेकेंड नंबर. So I will say here x plus second number is equal to 27, which implies that second number will be equal to 27. जब मैं इसको यहां पे ट्रांसफॉर करूंगा, it will be 27 minus x. So if I will take, let the first number be x, तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 27 minus x. Why? Suppose I say that जो फर्स्ट नंबर है वो 15 है, मगर मुझे पता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, तो एक तो 15 है, इसको मैं अगर x दूसरा नंबर रखता हूं दैट विल बी 27. जो x जो आएगा दैट विल बी 27. जब इसको यहां पे मैं ट्रांसफर करूंगा इट विल बी 27 माइनस 15, सो x विल बी इक्वल टू 12. दस अगर मैं कोई भी नंबर पुट करूं, y करूं पुट, सो जो सेकंड नंबर होगा दैट विल बी 27 माइनस y. सो आई विल सपोज let the first number be x, then the second number will be, so that will be 27 minus x, because sum of two numbers is 27. Now according to question says that the product of, if I multiply the product of these two numbers is 182. If I will multiply these two numbers, one is x, second is 27 minus x. Question says that if I multiply them, the result will be 182. So which means that x into 27 minus x will be equal to 182. Which further implies it will be x into 27, that will be 27x, plus minus it will be x square will be equal to 182. अब इस 182 को यहीं पे रखते हैं, तो मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करता हूं, सो इट विल बी माइनस 27x. इट विल बी, जब मैं इसको यहां पे प्लस करूंगा इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 27x plus 182 is equal to 0. But we have to find the numbers. Again हम फिर से पहुंचेंगे वहीं पे, that we call it the factorization method. अब यहां पे देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने क्या बोला है कि अगर आपको प्रीवियस वीडियो मेरा याद होगा तो मैंने आपको बोला है जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, व्हाट्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? It's 1. Here it's 1. What's the constant term? It's 182. So 1 into 182, that's 182. The product of A and C, I call it A and C, is equal to 182. Now remember, what's the x term? It's 27x minus 27. अब मुझे इस माइनस 27 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि वो दो नंबर्स जो हैं जिनका प्लस या माइनस इस 27 के बराबर होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होना चाहिए. सो वन विल बी द minus 14x and another will be minus 13x. Minus plus,
14 plus 13, that will be 27. But if I will say 14 into minus 13, it will be minus, that will be plus. 14 into 13, that will be 182. So it will be x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0, which further implies it will be equal to, now यहाँ पे दोनों में अगर आप देखोगे इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट 14 है, तो कोई कॉमन नहीं है. इसका जो वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो x को कॉमन निकालो, इट विल बी x माइनस 14. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन 13 और 182 दोनों फैक्टर हैं 13 के, तो मैं 13 को कॉमन निकालता हूं, इट विल बी x माइनस 1, इट विल बी x माइनस 14 इक्वल टू 0. अब इन दो के बाद एक, यहां मैं x माइनस 14 को कॉमन निकालता हूं, इंटू यहां पे क्या रहेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट x minus 13 into x minus 14 into x minus 13 is equal to 0, which simply means that now either x minus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. Multiply of two numbers is only equal to 0 when one of the number is equal to 0. यहां तो x into y अगर मैं बोलूंगा ये 0 के बराबर है, यहां तो x 0 के बराबर होना चाहिए या तो y 0 के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है इन नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर आएगा. Now either x minus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0, which further implies that जब मैं इस 14 को यहां पे ट्रांसफर करूंगा, so x is equal to 14, और जब मैं इसको वहां पे ट्रांसफर करूंगा, so x is equal to 13. Now the first number मैंने क्या लिया था, x, तो x क्या मुझे निकला, so x is equal to 14. So first number is equal to 14. Now what's the second number? Now it's equal to 27 minus x, 27 minus x, which implies it will be 27 minus. Now अब ये x किसके बराबर है, ये तो 14 के बराबर है, so which implies it will be equal to 13. So one number will be 14 and the second number will be 13. So this was our question number 3. Simply मैंने यही यूज किया जो क्वेश्चन में लिख के दिया था, वहीं से वही कंडीशंस यूज किए एंड आई गॉट द आंसर. सिंपली यहां पे आपको फिर से फैक्टराइजेशन मेथड करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट. जब आप आगे जाओगे आपको वहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप उससे भी ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा है हमें उसी से जाना है, दैट वी कॉल इट ए फैक्टराइजेशन मेथड. So moving to the question number 4 of the same exercise, that's 4.2. It's also one of the important questions many times asked in the examination, in the final examination. Now the question says that the altitude of a right triangle is 7 centimeters less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. मेरे पास एक right triangle है. Let me take a right triangle. Now A, B, C. मेरे पास एक right triangle है. Now the question says that if the altitude means simply the perpendicular side. If the altitude of a right triangle is 7 centimeters less than its base, अगर इसका जो अल्टीट्यूड होगा वो इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस होगा, एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका जो हाइपोटेन्यूज है, नाउ साइड अपोजिट टू द 90 इज द हाइपोटेन्यूज. नाउ इट्स गिवन दैट इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, लेकिन इन दो साइड्स के बीच में एक रिलेशन दी है. रिलेशन ये है, जो इसका जो अल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. Suppose that if I take its base be equal to 13. Now the question says that the altitude of a right triangle is 7 centimeters less than its base. जो इसका जो अल्टीट्यूड है, जो इसका जो परपेंडिकुलर है, वो इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. That means it will be 13 minus 7, that will be equal to 6. Now suppose मैं इस बेस को x लेता हूं, so what will be its altitude? It will be simply 13 minus x. It will be equal to 7 minus x minus 7. Why? Because the altitude is 7 centimeters less than its base. Base को मैंने क्या लिया? x लिया, तो ये 7 इससे 7 कम है, तो it will be 7 x minus 7. Now coming to the question, I will say let the base of a right triangle be x. Given that there is a relation between the altitude and the base, then altitude of a right triangle will be, now that's 7 centimeters less than its base. What space? X. So it will be x minus 7. Also, hypotenuse of
राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसका जो इस ये है हाइपोटेन्यूज वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। नाउ बाय पीजीटी दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now what's hypotenuse? It's 13. It's 13 square. What's base? Base is the x square plus what's perpendicular? Perpendicular is x minus 7 square. So it will be equal to 13 into 13. That will be 169 is equal to, it will be x square plus a minus b whole square. That's a square plus b square minus 2ab. That further implies it will be 169 is equal to, it will be 1x square plus 1x square, that's 2 times x square plus 7 sevens are, it will be 49 minus 2 sevens are, it will be 14x. It will be 14x. Now further it will be equal to 169 will be equal to, it will be 2x square. यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं सिंपली इसको इसी स्टेप में यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा. So it will be equal to 2x square plus 49 minus 14x minus, जब मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करूंगा it will be minus 169 equal to 0. It will be equal to 2x square, it will be minus 14x plus minus sign minus क्या आएगी 169 minus 49, that will be 120 is equal to 0. Finally I got that equation, the quadratic equation like this. It's 2x square minus 14x minus 120 equal to 0. अब देखो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 14 है, इसका जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है 120 है, सभी मल्टीप्लाई आप 2 है, तो 2 को मैं कॉमन निकालता हूं. सो इट विल बी x square, जस्ट टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इट विल बी x square minus 7x minus 60 equal to 0. अब ये कैसे आया? 2 into 1 is 2x square, 2 sevens are, it will be 14x, 2 60s are, it will be 120. जब 2 यहां पे हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, it will be x square minus 7x minus 60 equal to 0 divided by 2. That will be equal to x square minus 7x minus 60 will be equal to 0. Again we got the quadratic equation. अब मुझे क्या, इसके साइड्स मुझे निकालने हैं. फाइंड अदर टू साइड्स. वो दैट मींस एक तो मुझे x में है, दूसरा x minus 7 में है. So I have to find the value of x. Now again I will multiply the coefficient of x square and the constant term. What's the coefficient of x square? It's 1. It's 1. What's the constant term? It's minus 60. So 1 into minus 60, that's equal to minus 60. Now I have to split the middle term. I have to factorize this middle term. What's the middle term? That's minus 7. मुझे वो दो नंबर्स जोड़ने हैं जिनका प्लस या माइनस इस माइनस 7 के बराबर आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके 60 आएगा. सो आई विल सिंपली डू इट. It will be 12 minus 5. It will be minus 12 plus 5. 12 minus 5, it will be minus 7. But 12 into 5, that will be 60. So I will simply write, it will be x square minus 12x plus 5x minus 60 will be equal to 0. Which further implies, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है. So x को common निकालो, it will be x minus 12 प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, दोनों फैक्टर है 5 के, तो 5 को कॉमन निकालो, it will be 5 minus 12 is equal to 0. Now further, अब इन दो के बदले एक, so it will be x minus 12 into x plus 5 equal to 0. X minus 12 into x plus 5 equal to 0, which further implies either x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. तो लास्ट में मुझे क्या निकला? either x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0, which further implies जब मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करूंगा, it will be x is equal to 12 or x is equal to minus 5. Here x can never be equal to minus 5. Here x can never be equal to minus 5. Why? Because the length of the side or the length of any object can never be a negative. तो x minus 5 हो ही नहीं सकता है. तो हमारे पास एक वैल्यू बचा है, that's x is equal to 12, which means x will be equal to 12. लेकिन ये x क्या था? मैंने x को बेस लिया था, which implies base is equal to 12, but altitude इसका क्या निकलेगा? Altitude is equal to x minus 7, that's equal to 12 minus 7, that's equal to 5 centimeters.
Hence we find this base is equal to 12 centimeters and this perpendicular, this altitude is equal to 5 centimeters. Now by question, it was 7 centimeters less than its base. Exactly. It's 12, it's 5. So this altitude is 7 centimeters less than its base. So this was my question number 4. Now after completing this video, we have completed the exercise 4.2.